What's going on, ladies and gentlemen? My name is Dylan. Welcome back to the channel. Hopefully each and every single one of you are feeling fine and fantastic today. We are joined by the one and the only Tanya. Hi. Yes, ladies and gentlemen, we are reacting to another Ashish Chanchlani video. This is Science versus Commerce Part 2, Chapter 2. Number 1 was very funny. It was very, very funny, and a lot of us can relate to it. The reason why I like Ashish Chanchlani's videos is because he's so real when it comes to telling stories inside of his story. So he's got so many messages for each and every single one of us inside of his videos, and a lot of people can relate to a lot of things he says. Yeah. So I'm looking forward to chapter 2 so much, guys. You guys have been requesting this a lot, so we're going to watch it. Drop a big thumbs up if you do enjoy it. Hit that subscription button down below. Now, without further ado, let's get into this bad boy. Let's do it. So this is how decomposition of liquid happens using electricity. Any doubts? सर जब हम कैथोड डालते हैं एनोड डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो सर जो सोडियम के एटम्स है सर वो कार्बन कैथोड से क्यों अट्रैक्ट होते हैं क्लोरीन को छोड़ के वो कार्बन के पास क्यों जाते हैं सर ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी Okay. Any doubts? एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट Yes. सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था व्हेन आई केम फर्स्ट डे टू दिस क्लास सर करीना पहले आकाश के साथ बैठी थी ओके देन करीना नेक्स्ट डे विवेक के साथ बैठी You see, उसके बाद तीसरे दिन करीना नेक्स्ट डे नंगे कुणाल के साथ बैठी in the science, they actually asked the proper question. तेरी शक्ल पे टट्टी लगी हुई है मैं नाश्ते में बच्चे खाता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है सर Do I eat humans? क्यों होता है मैं ठोक दूंगा तेरे को ठोक दूंगा साला सुन ना चल बायो प्रैक्टिकल बंक कर देना That's so true. That's so true. तुझे बायो प्रैक्टिकल बंक करना है तुझे पता है मुझे बायोलॉजी से कितना प्यार है तुझे पता है ना मुझे बचपन से डॉक्टर बनना है मेरा एक ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं लोगों को ठीक करूं अरे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और तू बायो प्रैक्टिकल बंक करने की बातें कर रहा है Oh. बायो प्रैक्टिकल बंक करना है चल बहुत इंपॉर्टेंट है मिस नहीं करते और जो बताएंगे वो करना है अच्छे से तो आज हम करने We need to follow the teacher's instructions. आइए प्रैक्टिकल करेगा आशीष. थैंक यू सर क्या करना है सर माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को एडजस्ट करना है नहीं. फिर आज हम करेंगे So he said he wanted to be a doctor, yeah? And then they went to class. Hold it like a pen. Wait, so he wants to be a doctor and he... It's a cockroach. होगा सर घर पे परिवार वेट कर रहा होगा मैं क्या करूं सर काटा मैंने सर मुझसे नहीं होगा सर अगर नहीं किया ना तो फेल कर दूंगा. ठीक है सर अभी करता हूँ भाई सुन तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चेंज करने का फॉर्म इधर ही मिलता है ना थैंक यू यार Oh, that's funny. भाई मेरे को So he wants to be a doctor, but yet he doesn't want to perform surgery on a cockroach. She has to kill it, that's why. He has to kill it. अबे मेरे फोन का टेंशन ही नहीं है ये Asus का नया Zenfone 5Z है ये बैकग्राउंड नॉइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिंगटोन एडजस्ट कर लेता है That sounds like a promotion, eh? वैसे भी फोन बजे या ना बजे अपने को क्या टेंशन है अपने कॉमर्स के टीचर है कुछ बोलते थोड़ी है अरे अपने भाई जैसे टेंशन ही नहीं है They're just like family. सर फोन दे मेरे भाई फोन दे. सर आई एम सॉरी सर पहले अपने पेरेंट्स को लेके आना फोन लेके आना. सर आई एम सॉरी सर अरे कॉमर्स के टीचर इतने लीनियंट भाई जैसे रहते भाई जैसे नोट्स के फोटो भेजना है यार अबे क्या टट्टी फोटो क्वालिटी है तेरे फोन की क्या गरीबों के फोन यूज कर रहा है रुक मैं तेरे को अपने Zenfone 5Z में खींच के दिखा दूं फोटो ये देख ये फोन में ना AI सीन डिटेक्शन है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली देख इसने अभी टेक्स्ट मोड ऑन कर दिया है इसमें ऐसे टोटल 16 AI सीन डिटेक्शन टाइप्स है टट्टी फोन लेके घूमोगे तो टट्टी फोटो ही आएंगे ना हाँ भाई कौन सा चैप्टर है ये भाई चैप्टर नहीं है एक आंसर है. क्या पता नहीं क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा आंसर है. और कॉमर्स के सब्जेक्ट इतने इजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई. What's this? Was this science or commerce? Commerce. Ah, I can tell already, commerce, yeah.
सर पेपर हो गया, पूरा पेपर भर दिया सर थियरी से, ले लो सर। ये इंट्रो तो बढ़िया लिखा है, इस पे पूरे 1 मार्क तो पक्का मिलेंगे। बाकी का आंसर कहाँ है? कॉमर्स के एग्जाम्स इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं, तो मार्क्स तो यू मिल जाती है भाई, यू। Commerce is easy, you say? Commerce is easy? दो सर और 200 सप्लीमेंट दो। इक्वेट ही नहीं हो रहा है। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व किया, उसका राइट साइड सॉल्व किया, इक्वेट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का साइन यहाँ के कॉट से नहीं मिल रहा है, यहाँ का कॉट सॉल्व किया तो यहाँ पे साइन भी नहीं आता। क्या है यार ये? देख भाई, इस देश में मैथ्स ऐसी चीज है ना, तू अगर 2 स्टेप में इजीली निकालेगा ना, कोई भाव नहीं देगा। लेकिन अगर वही सम तू 8 स्टेप में घुमा के, हे परमात्मा मैं तेरा थ्योरम ठोक के लगाता हूँ, कर देगा ना, तो सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। अभी इधर तू लिख, मैं मेरे बाप का थ्योरम लगाता हूँ, यूलर तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ डाल। लिख, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 0, LHS into 0 is equal to 0, RHS into 0 is equal to 0, 0 equal to 0, therefore hence proof LHS equal to RHS। टीचर भी खुश, तू भी खुश, भगवान भी खुश, जा जाके नारियल फोड़। अरे सही यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, सारी एंट्री लिख दी, एडजस्टमेंट भी लिख दी, तो भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। मेरी बात सुन, मैं तेरे को सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। हाँ हाँ, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल में लिख दूं। अबे वो मैं बचपन में करता था। इधर लिख, क्या लिखेगा? ये मेरा सारा काम मेरा अकाउंटेंट देखता है, उसको जाके कॉल करो, मगजमारी वो देखता है, सिंपल। वैसे डिफरेंस कितने का है? 100 रुपए का। अरे 100 रुपया, तो 100 रुपया ले, चिपका, ऐसा लगा, थूक लगा के लगा, सबमिट कर पेपर, टीचर देगा 100 रुपया, टीचर खुद टैली करेगा, तेरे को घर पे मार्क्स देके जाएगा। टीचर खुश, तू खुश, भगवान खुश, जा जाके नारियल फोड़। ये यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो असाइनमेंट करके लाया? नहीं यार, बायोलॉजी के चक्कर में सब भूल गया। भाई तू? नहीं भाई, मैं भी भूल गया। बाकी सब किसी ने किया है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, सर को बोलते हैं आज कोई भी असाइनमेंट नहीं करके आया है, असाइनमेंट की डेट पोस्टपोन करवा देते हैं, क्या बोलते हैं? ओके, ठीक है, बेस्ट है। चलो असाइनमेंट सबमिट करो। सर एक्चुअली आज कोई असाइनमेंट करके नहीं आया है, तो सर हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर प्लीज़ असाइनमेंट की सबमिशन डेट पोस्टपोन कर दो। सर डेट वेट पोस्टपोन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा असाइनमेंट रेडी है। नहीं भाई, मैं भी भूल गया। नहीं भाई, मैं भी भूल गया। नहीं भाई, मैं भी Dirty dog! You dirty scoundrel! क्लास में Dude, honestly, आज असाइनमेंट का लास्ट डे। wait till the end of the video. कितने लोग करके असाइनमेंट? लोग 20 और असाइनमेंट 3। चलो टेंशन नहीं करो, आज सबकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। कैसे? मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। Dude, that's funny as heck. Oh my god. That is actually really funny. That is absolutely hilarious. You have to be a genius to think of Yeah, that. yeah. Oh my. सर वो नाम का पेज लगाना भूल गया था। नाम तो जरूरी है। हाँ सर, आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे लोग कितने आरामी एक दूसरे का सबमिट कर देते हैं। वो तो बात सही है, अपना नाम डाल दिया ऊपर से। चलो सर, चलाते हैं। Oh man. आराम खोरो। चलो बच्चों, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। राम, That was so hilarious. I've never seen that before. That's actually a smart idea. आशीष, प्रेजेंट सर। गंगोधर। सर वो एक्सेंट है। क्यों? सर उसके घर पे बहुत लिमिट्स है सर,
क्योंकि सर उसके माँ बाप ना उसका डेरिवेटिव निकाल निकाल के उसको अलग कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग है ना उसके फ्रेंड्स सब इंटीग्रेट कर देंगे। फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग हेंस प्रूव्ड। रोहित सर वो नहीं आया सर। क्यों बेटा? 17 घंटे पड़ता है सर। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है उसको, बेचारा गरीब का बच्चा, साइंस ले लिया एक तो। हेलो बेटा, बेटा तो कॉमर्स ले, कॉमर्स। सॉरी सर। वासु सर वो पिछले हफ्ते मर गया। आर.डी. शर्मा के बुक के नीचे दब के मर गया सर। जिंदगी हमारी पैराबोला बन गई है सर, कब ऊपर कब नीचे। अभी सर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो क्या डेरिवेटिव लगाऊंगा उस पे? मुझसे अटेंडेंस नहीं होगा, नहीं होगा। चलो पढ़ाई करते हैं। आ गए साले मनुष्य। ये तो पगार अच्छी है, नहीं तो एक एक को घर पे आके गोली मार के जाऊं। अटेंडेंस ले रहा हूँ। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। अभिषेक आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला, फिर से लेगा मेरी। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला बे? हर्ष सर वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों बेटा? उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है? अपना काम करना, अटेंडेंस ले। चोटिया साला, चोटी बन के घूमता। निकुंज सर उसको गाड़ी में What's that guy doing? He's got a toothbrush. Yeah. ऋषभ उसको कुत्ता खा गया। I mean, उसका होमवर्क कुत्ता खा गया। काम करना अपना। साले की चोटी काट के मुंह में डाल दूंगा। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या? अबे तेरे को टीचर किसने बनाया? Oh. दिनेश सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहा है वो। सिमरन नहीं देगी। नहीं आई है। Seaman. काला दाढ़ी वाली औरत। रोहित 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 सर एब्सेंट है सर। कमाल है, ये तो 1 महीने से नहीं आया। हर बार का हो गया यार ये। कैरी सर वो लोनावला गया अपनी आइटम के साथ। अबे तू क्या हंस रहा है? तेरी आइटम के साथ ही गए। Absolutely hilarious by Ashish again. Wow. I can absolutely relate to both sides of this video, and I think it's super funny. I mean, I can relate because when you finish high school here in Spain, I don't know how it works in the rest of the world, but here in Spain, when you finish high school, I mean, in high school, you do every kind of subjects. You go from design, history, science, everything, languages, you study everything. But then before you go to university, you have to take a 2-year course where you basically do only the subjects that are related to the degree you want to study. For example, if you want to be a doctor, you have to take a 2-year course where you only do science subjects. If you want to be a arts teacher, you take a 2-year course where you only do art history, you do design, everything related to what you want to study. And before I decided that I wanted to do a degree related to advertising, I wanted to be a marine biologist. So I took the path where all the subjects were science. And I regretted 1 year after. I mean, it was the worst. You had all these subjects where you needed to learn all the formulas, they call formulas, yeah, to do all the equations, and it was always so difficult because even though you knew everything, you knew the theory, you know how you had to do that to get the result was never, ever correct. Never. And in an exam where you could have scored a 9, because you made a mistake on a 1, instead of a 1, it was a -1, that 9 became a 3. And that was every exam. It was so much pressure, so much stress. In the end, I was like, you know what?
I'm not going to do this. I'm going to change to Commerce. to commerce, yeah, to AD, yeah, where you do like history, you do simple maths, you do all these easy subjects. Yeah, I was like, just do this. I can't put up with this pressure anymore. And as soon as I changed to commerce, I understand why everyone chose that. I mean, we were doing an exam on arts history. Mm. And we had the teachers gave us these recycled papers that you could find at the library. And all the exams were the same. I mean, they told us you have to study all the characteristics of these 20 different art pieces. So you need to know everything from the name of the author, the name of the painting or the art, whatever it was. Yeah, you needed to know what period it was created, what year, what movement it was created under, everything. So I went there knowing everything in my head, yeah, ready to take the exam. And I was always the last one to finish the exam. And I was like, why am I always the last one to finish the exams? Well, after a while, I discovered that what people were doing was they were going to the library, getting the same pieces of paper that they were giving us on the exam. At home, they knew that there was 30 art pieces, and they knew that the questions were always the same. So you knew all the questions, but you didn't know what art piece you would have to talk about. So what they did at home was getting 30 different pieces of paper, writing down all the characteristics for the 30 art pieces that we had to study, put them under the table, and then when the teacher told us, okay, you have to handling this and this, they used to go through all the papers, take the two that the teachers were asking for, handle them in to the teachers, the other ones rubbish, done. And everyone had a 10, and I was like, how? When I discovered that, I was like, oh, yeah, okay, this is the difference between commerce and science. And that's why I think he's totally hilarious, and I can totally relate to everything. Everything he says, it's 100% true. All of it. Even that moment where he was telling everyone, okay, who has done their homework, and a lot of people, everyone was saying, no, we haven't done it yet. All of them in the class, and even that one guy that in the end said he did do it. But even that one guy lied to him and said, yeah, I didn't do it at all, yeah? Yeah. The teacher comes in and he stands up and he says to the teacher, sir, can we postpone it because we haven't done it? All of us haven't done it, yeah? And then all the other kids say, yeah, we haven't done it as well. Can we postpone it? And then that one kid stands up and says, sir, we don't have to do that because I did my homework. And I can totally relate to that because as a teacher, we always have a teacher's pet. I don't mind it, but the other kids do not like it. I can tell you guys, the other kids don't like teachers' pets. I don't know why, but one of the examples is because of that very reason. Yeah. But as a teacher, trust me, it's fine. But as a student, I can see where they're coming from and how angry they get towards that. And I always had one kid in my class when I was younger. I'm talking about when I was a student. I always had that one kid in every class I was in that was exactly like him. For example, we had kids that used to write things on the board when the teacher would go out of class, and the teacher would come back and that one kid would dob in. Or something like that, you know what I mean? And that little scene alone, I can 100% relate with in so many different ways. It was, but that's what I mean about Ashish. Is that he tells stories inside of a story. So he can tell things, he can tell stories that each and every single one of us can relate to. Mm-hmm. And like Tanya was saying about her story with those so-called cheaters, yeah? We're not accusing anyone. No. But we can relate to things in Ashish's videos, which is so important when you're watching certain videos like this while reacting to different creators. And that's why I'm so fascinated to keep watching Ashish Chanchlani. Do you know what's worst? What's that? In my high school, I had the principal's grandson in my class. Oh, no. Who was also one of my teacher's son. Oh, no. So every time we tried to do that,
like, oh, can we postpone it? He was like, no, I did it. No, I did it. Always. He always did everything. He always had 10s in all the exams. He was like... That's what I said. That's what I said. You always have that one person. I'm telling you, always that one person. Horrible. Anyway, guys, let us know what you think down in the comment section down below. If you did enjoy today's video, drop a big thumbs up. Hit that subscription button down below. Both Tanya and I will speak to you in the next video. Peace. Bye.